Let's again solve a question from GATE 2023, and this question is based on pollution. And question is, which of the following is true according to the Central Pollution Control Board Government of India notification issued in year 2009? 24-hour average standard for PM 2.5 in ambient air is 60, whereas 24-hour average standard for PM10 in ambient air is 100. Okay. Second question is PM 2.5 के लिए इंडोर एयर के लिए 60 एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर PM10 एम्बियंट एयर के लिए 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 एवरेज स्टैंडर्ड PM2 पॉइंट एम्बियंट एयर के लिए 60 और इंडोर एयर के लिए PM10 की वैल्यू कितनी है 100. लास्ट वन इज 24-hour एवरेज स्टैंडर्ड फॉर PM 2.5 इंडोर एयर के लिए 60 एंड 24-hour एवरेज स्टैंडर्ड फॉर PM10 इंडोर एयर इज 100. ठीक है. तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द CPCB 2009 नोटिफिकेशन, जो 24-hour average air quality standards are, you can say PM 2.5 ये in ambient air is equals to 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और PM10 की जो वैल्यू है इन एम्बियंट एयर और 2 इट इज़ 100. ठीक. सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन. दोनों एम्बियंट एयर के लिए PM 2.5 60 है और PM10 जो 24-hour के एवरेज स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो है 100. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. Next question is, the sub-index value of nitrogen, NO2, SO2 and PM10 are 80, 80 and 100 respectively according to the National Air Quality Index released by the Government of India in the year 2015 and overall NAQI is. ठीक. तो in general जो NAQI है, it was introduced by the Government of India in 2050, provides a clear picture of air quality based on the concentration of key pollutants like this nitrogen oxide and sulfur dioxide and PM10. Okay. And if you have to calculate the AQI for this one, then it will be equals to maximum of all the sub index values. Okay. And sub index values are, you are given as 80, 80 and 100. So the max will be come out as 100. So the correct answer will be 100. So option C will be your correct answer.